Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. Today we are going to do unit number 6, The Kite's Vision and Pakistan. This is your textbook, and today we will do unit number 6, The Kite Vision and Pakistan. Kite का तसव्वुर और पाकिस्तान. Let's start the reading. First paragraph, page number 63. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. He aimed at raising people's spirit. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने मतलब ज़हूर पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल टाइम में वक्त में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क का एक दौरा किया. आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था. ही एम्ड, आपका मकसद, एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, लोगों में जज्बा को उभारना था. डू नॉट बी ओवरहेम्ड विद द एनॉमिटी ऑफ टास्क, के काम की कसरत से मगलूब ना होना. ही सेड इन द स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में अपनी एक तकरीर के दौरान में ये कहा था. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर. नई कौमों की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने महज पुख्ता इरादा, शेयर डिटर्मिनेशन, महज पुख्ता इरादा और किरदार की ताकत से अपनी तामीर की. You are made of sterling material and second to none. आपका जो है वो आप आला खूबियों के मालिक हो और आपका कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं. स्टर्लिंग मटेरियल, आला खूबियों के मालिक हो, एंड सेकंड टू नन, और आपका कोई सानी नहीं, आपकी कोई मिसाल नहीं. कीप अप योर मोरल, अपने इरादों को पुख्ता रखें, अपने हौसलों को बुलंद रखें. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराओ. यू शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. अपने फ़र्ज़ अदा करो, अपने फ़र्ज़ को निभाओ, अपना फ़र्ज़ अदा करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो. डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपने फ़र्ज़ को निभाओ और पाकिस्तान पर यकीन रखो. इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है. कीप अप योर मोरल, अपने मतलब हौसलों को बुलंद रखो. डू नॉट बी अफ्रेड टू डेथ, और मौत से मत डरो. वी शुड फेस इट ब्रेवरी टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम के वक़ार की हिफाजत के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए. डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करो. एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखो. इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है. द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए इस अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का पूरा सफ़र मुत्तहिद और कौमी यकजहती के महवर पर मबनी था. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ेह अंदाज में बात करते कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है. पाइवट होता है महवर, महवर. Here are the questions. First have, why did the Quaid-e-Azam have to take long tours during the early days of independence? So the answer is, during the early days of independence, the Quaid undertook country-wide tour. He aimed at building confidence and raising people's spirits. Second question is here, why did the Quaid want the oneness of whole nation? The first and foremost strength depends on unity. The Quaid wanted to see Pakistan a democratic and inevitable state. That's why
he was desirous of unity of the whole nation. Now the next paragraph is, we are nation, he affirmed 3 years the birth of Pakistan. हम एक कौम हैं, आपने पाकिस्तान बनने से 3 वर्ष पहले पुरजोर अंदाज में कहा, विद आर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तहजीब है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर हैं, नेम्स एंड नोमिक्लेचर्स, नाम और नाम रखने के असूल, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रमोशन, इक़दार का एहसास और तनासब, लीगल लॉस अपने कवानीन एंड मॉरल कोड्स अपने इखलाकी ज़वाबित, कस्टम एंड कैलेंडर अपने रिवाज और तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस अपनी तारीख़ और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन रुझान और ख्वाहिशात हैं. इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि वी हैव ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, मुख्तसरन ये कि हम जिंदगी के बारे में एक जुदागाना नज़रिया रखते हैं. थर्ड पैराग्राफ, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर इस्तवार था कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम हैं. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. इनकी कौमी और सियासी शनाख्त कम करने की किसी ने भी कोशिश की तो उसकी सख्त मुज़ाहमत की जाएगी, उसको सख्त तरीके से रोका जाएगा. नंबर 4, कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ. कायदे आज़म पुख्ता ईमान और यकीन रखने वाले शख्स थे. ही फर्मली बिलीव दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल. आपका पुख्ता ईमान था कि इस्लामी असूलों पर मबनी पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत माशरे के बहैसियत मजमूई इस्लाह करेगी. इन दिस ईद मैसेज सितंबर 1945, अपने ईद के पैगाम में जो कि सितंबर 1945 में फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. collectively मुश्तरका तौर पर और individually इनफरादी तौर पर. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे मुस्लिम माशरे ज़िंदगी के हर शोबे को मजमूई और इनफरादी तौर पर चलाता है. Here is the question, are we working according to the expectation of a great leader? The answer is no. We have completely forgotten and diverted from the path shown to us by the great leader Muhammad Ali Jinnah. We are just working for the sake of ourselves, not for our nation. The last paragraph of this chapter is, today the Qais Pakistan is facing numerous challenges. आज कायदे आज़म का पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात से दो चार है. We have forgotten how much struggle the Pakistan had made under the dynamic leadership of कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में कितनी जद्दोजहद की. डायनामिक लीडरशिप, मुतहर्रिक क़यादत. We can overcome our present difficulties by following the Qaid golden motto, faith, unity and discipline. हम कायदे आज़म के सुनहरी कौल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed.
हम कायदे आज़म की नौजवानों को नसीहत अब ये आप पर है कि काम काम और बस काम करो और आप लाजमी तौर पर कामयाब होगे, याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. So here is the question, what is the result of neglecting the advice of the Qaid? The answer is, the result of neglecting the advice of the Qaid is that we are falling a prey to severe social disease like corruption, terrorism, disunity and disintegration, etc. We have indulged in nation numerous challenges like sectarianism and provincialism. So, this is the reading of the unit number 6, the Qaid's vision and Pakistan. Now we will do the exercise work. Firstly, the question answers are here. The first is, how much confidence did Qaid-e-Azam have in his nation? The answer is, Qaid-e-Azam had great confidence in his nation. He believed that his nation could become the greatest Islamic nation if they would become united. He also believed that this nation had great qualities to make progress. Number 2. What was the Qaid's concept of our nation? The answer is, Qaid-e-Azam wanted the oneness of the whole nation. He believed that we should have our own distinctive outlook and we should think beyond all prejudices. Third is, what was the ideology of Pakistan in view of Qaid-e-Azam? The answer is, according to the Qaid-e-Azam, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation and any attempt to get them merged will not only be resisted but it will be futile. Fourth is, what can be the possible solution of our present problems? The answer is, the solution of our present problem is that we should follow the footsteps of our Qaid and be united as a nation. We should work hard and try to transform the dream of Qaid-e-Azam into reality. The fifth question is, how can we become a strong nation? Answer is, we can become a strong nation by removing disharmony and disunity among the people and by working hard and overcoming our individual and provincial differences. We should follow the footsteps of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So these are the question answers. Now the vocabulary part, and circle the ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. सो एंड सर्कल करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन इज अफर्म्ड. अफर्म्ड मीन सेड. अफर्म्ड मीन है बेटा सेड एम्फेटिकली. नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फेथ. स्ट्रॉन्ग फेथ मीन फर्म फेथ. नंबर 3, मोरल. मोरल मीन self-esteem. Number 4th, afraid. Afraid mean scared. Number 5th, face. Face mean cope up, cope with. Now next exercise is consult a thesaurus and find the synonyms. हमने इसके similar words लिखने हैं. Moral, self-esteem, voyage, journey, ambition, aspiration और goal. nomenclature. nomenclature का synonym लिखेंगे आप. codification. codification. identity, character. distinctive, unique. emergence, rise. struggle, attempt. numerous, many. strong, powerful. ideology, philosophy. C exercise, write the antonyms of the following words. mean हमने opposite meaning लिखने हैं. confidence, diffidence. honor, dishonor. believe, disbelieve. separate, collective. unity, disharmony.
political, non-political. Now the exercise D is the sentences of the idioms. First is bit and pieces. Sentence है, we are divided into bits and pieces on certain issue. Second, man in the street. He delivered his speech in such a way that even a man in the street was able to understand it. Next is raising spirit. He undertook a countrywide tour for raising people's spirit. Next, pass through. Sentence, they were passing through the difficult period. The last is fall a prey. We have fallen a prey to a fatal disease. Now the exercise is about the denotation and connotation. So denotation क्या है? Denotation is the literal and the dictionary meaning है. And connotation on the other hand refers to the idea that is suggested and associated with the word. This is not the correct meaning. So here are the some words. Firstly we will supposed to write down the denotative meaning, then positive और फिर negative. So the first word है notorious. Its denotative meaning में आएगा first column में infamous, second industrious, third criminal, then spinster, virgin, old maid, wretched, stern, harsh, strict, rigid, proud, arrogant, gorgeous, snobbish, shrewd, cunning, keen, selfish, economical, frugal, thrifty, miserliness. Faith, unsuccessful, futile and decline. So this exercise is E. Now on next page, page number 68, identify the primary and secondary stress. So ये these are the मतलब जो stress हमने देने हैं words उन पे हैं. Now the adverb concept is given here, and the third type of conditional of this type says that the sometime did not happens because a certain condition was not fulfilled. So this is the third conditional type. Now exercise A, find the kinds of adverb in the class. Here are the adverb of manner, place, time, frequency and degree. So यहाँ हमने लिखनी है एडवर्ब द मैनर. एडवर्ब मैनर में हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे दैट इज स्ट्रांगली, ब्रेवली, फर्मली. एडवर्ब ऑफ प्लेस में लाहौर, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट. एडवर्ब ऑफ टाइम अर्ली, टुडे, सितंबर 1945, 3 years. Adverb of frequency seldom, rarely, ready. And adverb of degree very, much, extremely. Now write 5 sentences using adverb of manner, place and time in the correct sequence. So 5 sentences हमने write करने हैं. The first is he walks slowly. Number 2, I have searched his book everywhere. This is adverb of place. Number 3, they met me yesterday. Adverb of time. Number 4, I am extremely grieved at his death. And number 5, she speaks so nicely. Now make sentences by using following words by infinitives. Infinitives होते हैं जब हम first form of verb से पहले to लगा देते हैं. Saw, I saw him to leave his work. Promised, I promised to complete my work today. Wanted, I wanted to help him. Began, the rain began to fall on earth. Asked, we were asked to do it forcibly. Told, I told him to be patient. Decided, I have decided to visit Canada.
Complete these phrases by adding gerunds and use them in sentences. Now, good at painting और good at learning, आप कुछ भी लगा सकते हैं. He is good at learning French. Sad at loss, they were sad at loss in business. Accused of overcharging, he was accused of overcharging from the customer. Tired of working, Ali is tired of working now. Now complete the following conditions. If you had studied hard, you would have succeeded. Second, if you had come to me, I would have taken you to America. Third, if I had seen him, I would have taken him to my place. Now, write 10 sentences using past perfect tense. So, past perfect में we use had as the helping verb preceded by third form of verb. So, now we will do the exercise. First is, they had already completed their work. Second, the peon had rung the bell when I entered the class. Next, had you already completed your drawing? Fourth, teacher had finished the lecture when student entered the class. Number 5th is, I had never seen him before. Next is, Pakistani team had won a number of tournaments. 7th, the train had left when we reached the station. 8th, he had won fame because of his hard work. Second last, I had told them not to do that. And the last 10th one is, Muslims had won a great number of wars. So, we have completed our unit number 6, the kite version and the kite vision and Pakistan. Now अब आपका ये work है, please note it down all the work on your journal, and this work is also have been uploaded on your web portal. You can check it from there, from them also, and note it down from there and make sure the learning. So wish you good luck and Allah Hafiz.